The problem is हमारे पार्लियामेंट में ही number of sittings कम होते जा रहे हैं. At the time of independence, we had parliament meetings around 130 to 150 number of days. पिछले लोकसभा में वो लगभग 60 के आसपास हो गया है. Judiciary वो बोलते हैं कि when a law is being passed, we need to know what is the spirit of the law, what is the background, कि कौन से पृष्ठभूमि से ये particular legislation अभी आया है. How do they find out कि constitution को कैसे interpret किया? They look at the Constituent Assembly debates. But Parliament में है ही नहीं ना, because discussion ही नहीं हुआ है. जैसे अभी बात हो रही थी 800 पार्लियामेंटेरियन हो जाएंगे, मतलब उसमें तो और लोगों को चांस नहीं मिलेगा बोलने का, क्योंकि 800 लोग तो बोल नहीं सकते इतने कम दिनों में. तो अगर मुझे कुछ बताना है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं और डिसरप्शंस करूंगा. Yes, exactly. If you participate at least one disruption, that means you have said, अच्छा, you have given yourself to the party leader, right? That I am going to put myself into you, even though it is compromising on institutional value, reputation, legacy. तो एक बार भी करने से आपको renomination likelihood ज्यादा हो जाए. Unless there is a real public consciousness among all parties, or there is a real, interest that is coming up, right? We are saying that overturning this is, very difficult. हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया है. ख्याति, क्या हाल चाल? हालचाल तो हमारे ठीक है आज तो, लेकिन वैसे बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं और सब लोगों की नजर उस पे है और हम यहाँ अपनी पुलियाबाजी करने बैठे हुए हैं. बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मतलब तीनों अच्छा, ही हाँ 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 इम्पोर्टेंट हाँ स्टेट्स हैं, नॉट जस्ट जी वन. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बड़ा दिन है, क्या कहते हैं, इलेक्शन जगत में एटलीस्ट. हाँ. हाँ. लेकिन मुझे यही सवाल था कि एक्चुअली कितने लोग इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं. हमारी भी जब मीटिंग हुई आज सुबह, तो लोग बोल रहे थे कि आज मैं पूरा दिन इलेक्शन देखूंगा, और मेरे पेरेंट्स भी कल ऑलरेडी एग्जिट पोल्स देख रहे थे. तो ये बहुत ही मतलब एक अपवाद है भारत की, इतना इंटरेस्ट रहता है, इतनी रुचि रहती है, जबकि हमारे इस राज्य में तो इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन रुचि रहती है. तो और ऐसा भी हमें पता है कि विधायिका भारत में इतनी अच्छे से तो नहीं चलती जितनी अच्छे से चलनी चाहिए, लेकिन उसके इलेक्शन रिजल्ट्स में लोगों को काफी रुचि है. तो ये गुत्थी विधायिका के बारे में हमें बहुत रहती है. हम लोगों ने इसके ऊपर कई एपिसोड किए हैं, चक्षु के साथ, माधवन के साथ, लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है एक एम्पिरिकल तौर पे भारत में विधायिका कैसे काम करती है, वो नहीं समझा है अभी तक. तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं आज, और हमारे पास एक बहुत शानदार गेस्ट है इस विषय के ऊपर बात करने के लिए. हमारे साथ है डॉक्टर अजित फडनिस. अजित एक प्रोफेसर हैं IIM इंदौर में, और इस विषय पर कई सालों से उन्होंने कई पेपर्स लिखे हैं. काफ़ी डीपली वो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका काम करते हैं भारत में. तो अजित, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में. थैंक यू वेरी मच. मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ये कॉन्वर्सेशन के लिए. तो अजित, यहीं से शुरू करते हैं ना आज की इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में. इतने इंटरेस्ट क्यों है भाई भारत में? अभी सौरभ बोल रहे थे हमें कि US में तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता. क्यों सौरभ? ना बिल्कुल भी नहीं. और मतलब इंटरेस्ट के अलावा, मतलब प्रधानमंत्री के घंटे गिन लो कितने सारे लगते हैं. मतलब 28 राज्य हैं हिंदुस्तान में. इतना समय क्या प्रधानमंत्री को इलेक्शन में लगाना चाहिए? और बाकी देश लोगों को भी, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में आपने एक जनरल नॉलेज के लिए चेक कर लिया कि भाई अभी CM की पदवी चेंज हो गई है, कौन सी पार्टी पावर में आ गई, उतना तक समझ में आता है. लेकिन हर व्यक्ति जो है वो 30-30, 40-40 घंटे नेशनल न्यूज जो है वो लोकल इलेक्शन में, कोई स्टेट न्यूज है तो ठीक है, मैं समझता हूँ भाई बंगाल का जो लोकल चैनल होगा उसको फॉलो करना चाहिए, पर नेशनल न्यूज सिर्फ इलेक्शन फॉलो कर रही है, प्रधानमंत्री भी लोकल इलेक्शन फॉलो कर रहा है. ये सब क्या चल रहा है भाई हिंदुस्तान में? मतलब ये तो कुछ ज्यादा, मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा हो गया है. हाँ, आई मीन इलेक्शन मतलब जैसे हम भारत में जैसे बोलते हैं कि इलेक्शन एक पर्व है, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए हर कोई शामिल होना चाहता है, हर कोई अपना योगदान देना चाहता है, और उसी से ये ओवरऑल ये सेलिब्रेशन होता है. एंड इसलिए इलेक्शन एक बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए. और ऑफ कोर्स इलेक्शन के बहुत बेनिफिट्स भी हैं. इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिशियंस आते हैं, कुछ फ्रीबीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो लोगों को
वो सब attraction भी है. There's an attraction in elections, right? There's an emotion in elections. Then there's a result in elections. जो भी हम बोलते हैं कि बॉलीवुड में जो पदार्थ इम्पोर्टेंट है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो सब चीज है इलेक्शंस में. इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें इमोशंस है, और इसमें सेलिब्रेशन है. एंड उसी के चलते ऑल ऑफ अस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट होके उसको एंजॉय करके उसको करते हैं. ऑफ कोर्स हार जीत तो होती ही रहती है, एंड हार जीत तो इलेक्शंस का एक अंग है, एंड उसको एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना है. नहीं, लेकिन अजीत, इसमें थोड़ा सा मैं चैलेंज करूंगा कि भाई ठीक है, ये काफी सारी जो चीजें हैं, जैसे हम बोलेंगे कि भाई जैसे कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है तो वहां के लोगों को मतलब वो पर्व वाला जो चीज है वो उनको उनको लगना चाहिए. ठीक है कि भाई हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन आ रहे हैं, हमको फ्री भी दे रहे हैं, मेरा चीफ मिनिस्टर भी चेंज होने वाला है, मैं जाके वोट करूंगा तो आपका पार्टिसिपेशन भी है. तो लेकिन अभी कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा है तो उससे भाई किसी को यूपी में किसी को क्या ही मतलब भाई, लेकिन वो सारे यूपी वाले भी देखेंगे इलेक्शन क्या हो रहा है, या फिर कर्नाटका वाले यूपी में भी देखेंगे कि इलेक्शन हो रहा है तो क्या क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वहां के जातीय समीकरण क्या है मेरे का. और एक आजकल पहले शायद नहीं पता होगा, अभी तो सब लोगों को हर स्टेट के बारे में इतने ज्यादा डिटेल्स पता है. मतलब अच्छी चीज है, कुछ तो जनरल नॉलेज के लिए है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना एक नॉर्मल ऑब्सेशन के बियॉन्ड है कि हर स्टेट के क्या कहते हैं इलेक्शन का इतना, और खासकर देश के प्रधानमंत्री का हर इलेक्शन में इन्वॉल्व होना. मतलब और ये सिर्फ मैं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, हम पहले भी होता रहा है हिंदुस्तान में ना, तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई एकदम हाल फिलहाल वाली चीज है. पहले थोड़ा कम होता होगा, अभी थोड़ा ज्यादा होता है, उतना ही फर्क है. लेकिन हमारे इलेक्शंस में हमेशा प्रधानमंत्री इन्वॉल्व रहते हैं, स्टेट इलेक्शन में भी. जबकि मतलब ये भी क्या एक अलग चीज है, मुझे नहीं लगता बाकी पूरी दुनिया में इतना ज्यादा है ये चीज को लेकर के. नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं. एक तरह से देख सकते हैं कि एक स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है तो दूसरे स्टेट में क्यों इन्वॉल्व होना है, क्यों वो अपना टाइम गवा रहे हैं उस चीज में. वो एक तरफ से उस हिसाब से भी देख सकते हैं. बट मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव लाइट में देखता हूँ कि कोई भी स्टेट हो, हम उसको एक भारत का अंग मानते हैं. तो इसलिए उस स्टेट में जो हो रहा है वो भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग है. वो हम जानना चाहते हैं कि उस स्टेट में भी हो रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि उस स्टेट में जो हो रहा है वो नेशनल लेवल पे भी ट्रांसलेट हो सकता है. राइट. तो हम सारे स्टेट्स को अपना मानते हैं और सारे स्टेट्स में जुड़ते हैं, सारे स्टेट्स में पता लगाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होगा. और वो कभी कभी जो स्टेट्स में होता है वो नेशनल ट्रेंड भी सेट करता है. तो इसलिए एक्चुअली ये इलेक्शंस में लोगों का इंटरेस्ट है, बिकॉज कुछ लोग हैं जो लोकली बंगाल में है या तमिलनाडु में है या पुडुचेरी में है, वो सब भी इंटरेस्टेड है, आसाम में है और सब. राइट. बट नेशनल लेवल पे भी हमें थोड़ा ट्रेंड्स का पता चलता है कि क्या लोगों का क्या विचार है, और वो नेशनल इलेक्शंस, नेशनल मूड क्या है. तो बाकी बाकी जैसे यूएस में है, उनका एक अप्रूवल, रेगुलर अप्रूवल रेटिंग लेते हैं वो लोग. राइट. हमारा एक अप्रूवल रेटिंग नहीं है उस टाइप से, उतने ऑर्गेनाइज में. कुछ लेवल तक सर्वेस वगैरह बढ़ चुके हैं अभी. बट फिर भी हम मानते हैं कि जो स्टेट इलेक्शंस है वो नेशनल लेवल, नेशनल मूड को वो दर्शाते हैं. और इस हिसाब से भी हमें स्टेट इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. और मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि स्टेट इलेक्शंस में क्या हो रहा है, उसमें उसका जो पॉलिसी इम्पैक्ट है, जैसे कि अभी बंगाल में एसआईआर हो रहा है, राइट. तो उससे काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये कुछ एक अलग एक्सरसाइज हुई है, इसका क्या इफेक्ट आया है. तो आई थिंक उसकी वजह से उस पर ज़्यादा फोकस बढ़ गया है, राइट. तो इस तरह से जब स्टेट इलेक्शंस में कोई सी ऐसी पॉलिसीज को लाया जाता है जिसका सबको लगता है कि ये फ्यूचर में और जगह पे हो सकता है, या कोई एक बड़ा इम्पैक्ट उससे आ रहा है, या क्या वो एक एलिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का जिसे जिसे जो वहाँ अलग तरीके से काम कर रहा है, या कुछ वहाँ अलग हो रहा है. तो इसलिए सब लोग उसके ऊपर और नज़र डालते हैं कि हम शायद एटलीस्ट फ्यूचर को इससे समझ पाए कि अब जो हुआ है उससे हम आगे का एनालिसिस भी कर पाए वहाँ से. नहीं, आई थिंक थैंक यू. वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंसाइट है. और जैसे जैसे हम कभी कभी समझते हैं कि इंडिया बहुत सेंट्रलाइज हो रहा है. वो एक तरफ से वो भी सही है कि वो काफी सेंट्रलाइज हो रहा है, काफी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस ले रहा है.
बट दूसरी तरफ से देखा जाए देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है, काफी पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। तो हर एक स्टेट इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि कोई नया पॉलिसी एक्सपेरिमेंट करे और देखे कि जनता उसका क्या राय है उस पॉलिसी के ऊपर, और उससे थोड़ा सा फिर चेंज करके दूसरे स्टेट में जाएंगे और फिर पता लगता है कि कैसे चेंज होना है चीजें को। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन। हम्म। सही। तो इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन के बाद विधायक चुन के आते हैं, और अब हम लोग उसी के ऊपर बात करना चाहते हैं, ये विधायक करते क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए और एक्चुअल में क्या है, राइट? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे पहले अजीत, हमको यही जानना था, अब विधायिका का अगर हम लोग तीनों, न्यायपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को देखें तो हमको लगता है कि विधायिका का जो महत्व है वो भारत में धीरे धीरे कम हो गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से, वगैरह वगैरह। तो आपको इसमें क्यों रुचि आई कि आप ये विधायिका को और डिस्कस करने लगे और इसके ऊपर जानने लगे? नहीं प्रणय जी, जैसे आपने बोला, एंड इलेक्शंस का इंस्टीट्यूशंस के के साथ बहुत गहरा लगाव है, क्योंकि हम इलेक्शन रिजल्ट को ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, राइट? और जी। यहाँ पे ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन के ट्रस्ट के बारे में आता है, बट बाकी इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, राइट? सो इलेक्शंस आती जाती हार जीत होता रहता है, बट कुछ इंस्टीट्यूशंस होता है जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस है, और वो लॉन्ग टर्म नेशन का डायरेक्शन को वो इंस्टीट्यूशंस संवारता है, बनाता है, राइट? और उसमें से मुझे लगा कि काफी मुख्य जो रोल है वो पार्लियामेंट का होता है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, राइट? एक तरफ से आप देखा जाए तो पार्लियामेंट में ही देश बना है, राइट? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पार्लियामेंट में ही बैठी है, राइट? पार्लियामेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है और पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। तो जो हमारा देश के बारे में जो इमेजिनेशन है वो पार्लियामेंट से ही शुरू होती है और पार्लियामेंट से ही चेंज होते जा रही है, राइट? तो जो भी देश को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता है वो पार्लियामेंट को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और यही मेरा मोटिवेशन था कि सिंस मुझे हमेशा लगता है कि देश को थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहिए। ये जो टेम्पररी चीजें हैं वो आती है जाती है, राइट? बट कॉन्स्टिट्यूशन इज परमानेंट, और फिर हमारा पार्लियामेंट इज परमानेंट, इंस्टीट्यूशंस आर परमानेंट। और ऐसा ही कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन पे ध्यान देना, और कैसे उसमें डेवलपमेंट्स है, कैसे उसमें प्रॉब्लम्स है। कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम से मुक्त नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम्स का परिहार निकालना, सोल्यूशन निकालना, वो मुझे लगा जैसे एकेडमिक थिंकर्स है, बुद्धिजीवी है, उनको इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और प्रैक्टिशनर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। और दैट इज आई मुझे बहुत खुशी है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरली कम्युनिटी टुडे एंड डिस्कसिंग अबाउट एन इश्यू जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रुचि से मैं इस चीज को देखता हूँ। तो इसमें लेकिन पार्लियामेंट के अलावा जैसा प्रणय बोल रहा था, विधायिका और पार्लियामेंट, मतलब आपको ज्यादा रुचि पार्लियामेंट में रही कि ये भी लगा कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं कि कम हैं? उनके बीच में आप कैसे, उनको आप कैसे तोलते हैं? क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स भी मिलकर के उतना ही डायरेक्शन फ्यूचर का सेट करते हैं जैसे पार्लियामेंट सेट करती है? ऑफ कोर्स दोनों हम्म, इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स दोनों हम्म, इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट है, राइट? 3 हम्म, लिस्ट है एक्चुअली। एक सेंट्रल नहीं लिस्ट है, नहीं, इन थ्योरी एक तो है। स्टेट लिस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में मैं बोलूंगा, इन हाँ, थ्योरी तो बिल्कुल है, पर प्रैक्टिस में भी क्या आपको लगता है कि लेजिस्लेचर्स ने उतना डायरेक्शन सेट किया है कंट्री का जैसे पार्लियामेंट? वैसे पार्लियामेंट की स्पीचेस वगैरह भी लोग देखते हैं वगैरह, और हाँ, उसका काफी नेशन वाइड इम्पैक्ट हो जाता है। हाँ। वैसा आपको लेजिस्लेचर का एटलीस्ट पॉपुलर डिस्कोर्स में नहीं देखा, बट आई डोंट नो कि आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव से आपने क्या नोटिस किया है। नहीं, लेजिस्लेचर इज द अप्रूविंग बॉडी, हम्म, राइट? हम बोल हम्म, सकते हैं कि कभी कभी एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्गर होता है, कभी कभी एग्जीक्यूटिव वीकर होता है, बट एट द एंड हम्म, ऑफ द डे द अप्रूवल बॉडी जो होता है वो लेजिस्लेचर है। एंड हम्म, हमारे देश में जब इतना वैरायटी है, इतना डाइवर्सिटी है, इतने नंबर ऑफ पार्टीज है, राइट? लगभग हम्म, हमारे पार्लियामेंट में अराउंड लगभग बिटवीन 38 to 40 पार्टीज रिप्रेजेंट होते हैं।
तो इतने डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जब रिप्रेजेंट होते हैं, इतने डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जब लोग इलेक्ट करके पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, तो हम वो जो अप्रूवल बॉडी है, जो फाइनल बॉडी है जो अप्रूव करता है, उसको हम कैसे नकार सकते हैं, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है, हम देख ही रहे हैं। आई मीन पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हम पिछले महीने ही देख चुके हैं पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल जो एक बहुत बड़ा नारी शक्ति का एक लेजिस्लेशन एक आया था, और वो लेजिस्लेशन पास हो नहीं पाया, राइट। तो सबसे बड़ा एंड एंड ये हम चर्चा कर सकते हैं कि मैं हमेशा समझता हूँ कि जो भी हुआ, राइट, वो मुझे लगा कि वी नीड अ लेजिस्लेशन, राइट, वी नीड अ लेजिस्लेशन जो वुमेन को कुछ सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट में बहुत ही कम है, 14% है हमारे पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स, राइट। इतने सालों बाद भी, 75 इयर्स बाद भी हम इतना ही कम परसेंटेज जो वुमेन विधायक है हमारे पार्लियामेंट में, वो बहुत ही कम है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ नोकझोंक हुआ, इसका सोल्यूशन निकाल के वो पास हो जाना चाहिए था, राइट। एंड ये एक तरह से एक मिसाल है कि पार्लियामेंट कभी कभी, राइट, ऑल्दो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है पार्लियामेंट के ऊपर, बट वो कभी कभी वो एक्सपेक्टेशंस पे उतरता नहीं है, राइट। कभी कभी वी हैव फेलियर्स, एंड जो मैक्सिमम हमारे फेलियर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट, राइट, लैक ऑफ टेकिंग पीपल अलोंग। एंड उसी से मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि जो इंटेंशंस राइट है, हम करना चाहते हैं, पर हम लोग को साथ में नहीं ले जा पाते, इसलिए मेजर चीजें जो होती है हमारे देश में, वो हो नहीं पाती, राइट। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टीज है, जो मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट है। सो वी नीड टू मैनेज द डिफरेंट इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू रीच द नेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को साथ में लेके जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शन पे लेके जाएंगे तो हो सकता है कि विधायक पारित हो जाए, राइट, हो सकता है कि लेजिस्लेशन पारित हो जाए, पर बहुत बार उसका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। एंड सो पार्लियामेंट इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश को एक साथ लेके जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, लोगों को साथ में लेके अप्रूवल के बिना, आपका या तो ये विधायक पास नहीं होगा, या पास हो जाएगा बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज द क्रूशियल डिफरेंस दैट पार्लियामेंट मेक्स। राइट। तो हम लोग वही सौरभ ये बोल रहे थे कि जैसे राज्य पे जो विधानसभा है वहाँ पे तो लोग सिर्फ 30 दिन से भी कम मिलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे राज्यों में जो विधानसभा है वहाँ पे सिर्फ 30 दिन मिलते हैं एक साल में। तो क्या ही वो चेक कर पाएंगे जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो इसके ऊपर भी कुछ ट्रेंड्स है क्या अजित, कि हम लोग क्या विधायिका ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? ये ट्रेंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? राज्यों में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय तौर पे क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ पता है क्या? तो ट्रेंड्स आर लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, ट्रेंड्स आर डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। और मैं क्यों पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि राज्य के लेजिस्लेचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, उसमें भी काफी ध्यान देना चाहिए। बट पार्लियामेंट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो हमारे देश में है। हर कोई स्टेट लेजिस्लेचर्स देखता है हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है, और उसके थ्रू ही स्टेट्स में भी थोड़ा वो एग्जाम्पल सेटिंग हो जाता है, राइट। ऑफ कोर्स आजकल ऑपोजिट भी होता है, राइट। सम स्टेट्स आर सेटिंग अ बैड एग्जांपल फॉर द पार्लियामेंट। आजकल वो रिवर्स एक्शन भी शुरू होने लग गया है, विच इज मोर वरीसम, राइट। बट अगर कुछ देश के कंट्री लेवल पे कुछ चेंज होना है, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट, बिकॉज दीज आर नॉट ओनली लीडर्स जो पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुआ है, दे आर ऑल्सो द टॉप लीडर्स इन द पार्टी। और हमारे देश में ऐसा है कि काफी स्टेट्स में भी नेशनल
पार्टीज ही रूल कर रहे हैं, राइट? एंड सो जो 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 चीफ मिनिस्टर होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और हम कैसे बिहेव करना है, राइट? हो सकता है कुछ स्टेट्स में ऑपोजिशन लीडर चीफ मिनिस्टर, वो देखते हैं कि मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बिहेव कर रहा है, कि उसी लेवल पे उनका भी ध्यान जाता है कि मुझे भी ऐसा बिहेव करना चाहिए, राइट? सो फ्रॉम दैट पर्पस मुझे लगता है कि पार्लियामेंट पे फोकस करना चाहिए. वी हैव टू सेट एग्जांपल्स फ्रॉम द टॉप एंड देन वो पर्कुलेट होके स्टेट लेवल पे भी आएगी एंड स्टेट लेवल में भी इम्प्रूवमेंट होगा. ऑफ कोर्स अलग अलग स्टेट्स में देयर आर डिफरेंट ट्रेंड्स. जैसे कुछ स्टेट्स में देयर पार्लियामेंट बहुत कम जैसे लेजिस्लेचर्स बहुत कम मिलते हैं, जैसे 30. कुछ स्टेट्स में ज्यादा मिलते हैं 50. बट द प्रॉब्लम इज हमारे पार्लियामेंट में ही नंबर ऑफ सिटिंग्स कम होते जा रहे हैं, right? At the time of independence we had parliament meeting for around 130 to 150 number of days. अभी वो कितना कम हो गया, राइट? पिछले लोकसभा में वो लगभग पीआरएस का मैं डेटा देखूं तो वो लगभग वो 60 के आसपास हो गया है, राइट? वी हैव ड्रॉप फ्रॉम 150 टू 60, राइट? सो जब हम पार्लियामेंट को कम इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक तरफ से ये भी सिग्नल होता है कि बिकॉज पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो हम देश के लोगों को भी इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल जो हम देश को देते हैं एज अ वेरी प्रॉमिसिंग डेमोक्रेसी, एन एक्सेप्शनल डेमोक्रेसी, एज अ डेमोक्रेसी विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड. जब हम 1950s को चर्चा देखेंगे अबाउट जो स्कॉलर्स थे, राइट? नोबडी एक्सपेक्टेड. देयर इज अ टॉप स्कॉलर कॉल्ड एडम पिजोर्स्की, right, who did a research on various parliaments and various democracies, और उनको लगा कि India is an exceptional democracy which has stayed a democracy despite being a low per capita income. So हम वो टाइप का एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ना चाहते हैं. That means we need to have a very active parliament. और इस लेवल तक जो नंबर ऑफ सिटिंग्स घटना from 120, 130 to 60 is a very depressing sign. हम बाकी पार्लियामेंट्स में भी कंपेयर करेंगे. ये ग्रेजुअली कम हुआ है अजीत, या कोई एक बीच में एरा ऐसा आया जब शार्प डिक्लाइन हुआ, या फिर ये नहीं, धीरे it is a धीरे धीरे होता गया ग्रेजुअल yeah, no, डिक्लाइन? it is a gradual, right? So across various parties, across various points of time, it has reduced gradually. आप पूरा जो सिटिंग्स का ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे it has happened very gradually, right? In a way it is happening that we are learning from the previous Lok Sabha term and we are doing worse than that. इसमें जब हमारी नंबर ऑफ सीटिंग्स कम हो रही है तो किस प्रकार की एक्टिविटी जो संसद में होती है हाँ. वो घट रही है? किस प्रकार के सेशंस पहले से कम हो रहे हैं? ये कुछ आप और डिटेल कर सकते हैं? कि हाँ. नंबर ऑफ बिल्स तो शायद उतने ही पास होते हैं जितने पहले होते थे, या वो भी कम हुआ है, या फिर नहीं. हाँ, नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस भी कम हुआ है थोड़ा सा. Right now, I think from the latest statistics जो मैंने देखा है, there are roughly last लोकसभा में we are passing around 220 total number of bills, right? But earlier we used to pass in excess of 300, right? But वो भी हो सकता है कि early time पे जो नया पार्लियामेंट है, ज्यादा विधायक पास होना चाहिए because we are a emerging nation, right? But जो consistent decline हुआ है, that is a worrying thing. और जो ख्याति जी बोल रहे हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो नंबर ऑफ सिटिंग्स ड्रॉप हुआ है उसमें से हम ब्रेकअप करते जाएंगे तो व्हाट इज द कंपोनेंट विच इज ड्रॉपिंग मोर, राइट? तो कुछ चीजें जो स्थिर है, जैसे क्वेश्चन आवर स्थिर है, राइट? 1 आवर ऑफ क्वेश्चन आवर वो स्थिर है, वो होता है. बहुत बार वो डिसरप्ट होता है बट एटलीस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम इज देयर, राइट? जो 1 आवर वो क्वेश्चन आवर तो होता है, राइट? फिर हमारा एक पार्लियामेंट्री इनोवेशन है 0 आवर, which is a fantastic innovation जो इंडियन पार्लियामेंट में ने बनाया है. that happens after the 0 hour, क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे इश्यूज है. so we need a kind of it becomes a pressure cooker kind of a situation. We need a kind of avenue by which these immediate issues that people are facing can be vented out, and 0 hour is a very powerful tool which is contextualized to the Indian parliament, right? And so that was an important thing. तो अजीत, इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये फर्क बता दीजिए ना क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बीच. या क्वेश्चन आवर इज अ सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट जो जिससे कि लेजिस्लेटर्स कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते
many times it is questions regarding to national issues, right? So these questions may relate to, कोई स्कीम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, राइट? अभी जैसे टैरिफ्स में है, so what is the government position on tariffs, key schemes and issues, right? So कोई करप्शन का इश्यू हो गया, किसी को उसके बारे में पता करना है कि गवर्नमेंट ने क्या इस पे चीज किया है, right? So these are systemic issues which are raised through question hour, right? तो हर एक क्वेश्चन आवर का एक पर्टिकुलर क्वालिटी होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट, पार्लियामेंट इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर क्वालिटी होता है. तो क्वेश्चन आवर का ये क्वालिटी है कि वी आर ट्राइंग टू रेज सिस्टेमिक एंड लॉन्ग टर्म इश्यूज दैट वी वांट द गवर्नमेंट टू आंसर, राइट? सो क्वेश्चन आवर का ये बेनिफिट है कि आपको उस चीज का एक आंसर मिलता है, राइट? तो इट इज डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, राइट? पार्लियामेंट का मंडे टू फ्राइडे एक मिनिस्ट्री टेक्स अप क्वेश्चंस on one particular day, and जो questions है पूरा accumulate होके, and the minister is asked to answer for those questions, right? 0 hour is different. 0 hour देश में कोई घटना हुई, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले जबलपुर में जो बहुत दर्दनाक घटना हुई, it talks a lot about safety, right? Safety in our tourist places and things like that, right? So these are the kinds of issues जो एक singular incident हुआ, but they are trying to point to larger things, right? And जो उस constituency में जो MP था, right? He or she feels compelled कि वो उसको पार्लियामेंट में उसको रेज करे, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गुस्सा है वो थोड़ा सा it becomes a forum where it can be raised, right? And ऐसा नहीं कि it happens only, बहुत बार हमारे people don't know how these instruments are used, right? मैं एक घटने के बारे में आपको बात करना चाहता हूँ, that we had a particular student यहाँ पे जिसको पार्लियामेंट के बारे में कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं था, क्लास में ऐसे ही बैठा हुआ था. एक इंसिडेंट हुआ उसके लाइफ में. He had a cousin sister, right? She had gone for a particular research in an archaeological site or something. Some very bad, thing happened, and she died while doing research in that particular site, right? उसको वो example उसको बहुत hurt किया, right? And then he said, and वो ग्रेजुएट हो गया, फिर बाद में कहीं से मेरा कांटेक्ट निकाला, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि सर ये मुझे बहुत इफेक्ट किया कि हमारे जो रिसर्चर्स है, राइट, उनके लिए सेफ्टी कोई सेफ्टी का कोई वही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है वहां पे, राइट? एंड ही सेड ये इश्यू मैं चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट में रेज हो, राइट? इट्स नॉट मेरे सिस्टर का इश्यू नहीं है. It is just an example where I'm trying to highlight a larger thing, right? That should be addressed in all such places and all such things. And so वो मेरे पास आया है, वो बोला कि मुझे संपर्क है अपने MP के साथ, मैं इसको कैसे रेज करूं? So I said you can raise it through rule number 377. So rule number 377 में you can go and speak to your MP and ensure that it is raised on a national level. And so he contacted his MP. I said, कभी कभी एमपीज को पता नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करना. आप एक फॉर्मेट में लिखो and you give it to the MP and let him, or in this case it was him, let him raise it in the parliament. And then after a few days he said that it was listed. He showed me it was listed on the floor, on the house as a rule number 377. Right? So that is the kind of a difference that you can make, where you can raise these things. These are officially recorded, right? And so for future, right, this goes on to direction to various ministries to act on these things, right? Of course, India is a slow nation in some sense, right? So चीजें थोड़ा कार्यान्वित होने में time लगता है, but you get the opportunity to raise these different issues. Yeah, and that is why Parliament is a very important forum for some. बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये दिया कि किस तरह से इसमें एक एमपी एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं संसद में. तो आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि हम सिर्फ जब लोकसभा में एक सेशन चल रहा होता है तब उनकी जो स्पीचेस होती है वो सुनते हैं, तो हमको लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही है और वो वोट करते हैं. पर इसके अलावा और कौन से मैकेनिज्म्स है जिनके थ्रू
हमारे विधायक संसद की कार्यप्रणाली में हिस्सा लेते हैं। हाँ, तो नहीं, एक तो इससे क्वेश्चन। पहले वो ख्याति का जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर कंप्लीट हमने नहीं करने दिया, हम भटक गए थे कि कौन सी हाँ, चीजें कम हुई हैं, ख्याति ने पूछा था। हाँ, हाँ। तो नो, आपने दो एग्जाम्पल दे रहे थे जो नहीं कम हुई, शायद 0 आवर और क्वेश्चन आवर, पर नो, कौन से कम हुए आप बताने वाले थे, शायद हमने नो, आपको थैंक यू सर। मैं कभी कभी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, बिकॉज कोई ऑफ स्टूडेंट का एग्जाम्पल होता है, देन यू कोर्स ऑफ कोर्स कनेक्टेड टू दैट इशू, बट व्हाट ऑफ यू आर कोर्स सेइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल इशू। तो क्या हाँ कम हुआ है, राइट? एंड दैट इज हाँ एन इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? एक तो हमने हम्म चीज, सो ये सब चीजें तो स्थिर है जो मॉर्निंग हम्म सेशन में होता है। मैं लोकसभा की ज्यादा बात कर रहा हूँ, फ्रॉम 11 हम्म o'clock टू 1 o'clock, ये 2 hours का ये चीज होता है। देन यूजुअली जो आफ्टरनून में होता है वो विधायक के ऊपर चर्चा होती है, right? So we said parliament time has reduced by more, close to 50% or more than 50%. The number of राइट laws have not reduced, right? They have reduced maybe by 25%, right? तो की चीज किस में कमी हो रही है? The amount of discussion per law, उसमें कमी हो रही है कि हम उस लॉस पे डिस्कस नहीं कर रहे, right? We are not having enough discussion, we are not having different points of view reflected in the laws, right? And that is why जो जो laws pass हो रहे हैं वो पूरी तरीके से एक solid law नहीं है, right? Because जैसे जब हम research paper लिखते हैं ना, we get inputs from other scholars, और उस input से हमारा research paper improve होता है, राइट? सो सिमिलरली लॉज में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यू नो बिकॉज वाई, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज all these MPs come from different parts of the country. They have so many diverse experiences that they bring, right? तो कोई भी एक छोटा प्रोविजन होगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग तरीके से वो इम्पैक्ट होगा। वो सेंट्रलाइज आप तरीके से करोगे तो यू विल नॉट फाइंड आउट जो लोकल लेवल पे जो इफेक्ट्स हो रहा है और वो कैसे वो इनकॉर्पोरेट किया जाए। द फैक्ट कि हमारे लॉज में कम डिस्कशन हो रहा है, मेनी लॉज आर बीइंग पास्ड विद इंट्रोड्यूस होके, आजकल स्टैंडिंग कमिटीज में भी कम लॉज जा रहे हैं। सो एटलीस्ट अर्लियर वी हैड दिस पॉसिबिलिटी कि ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं हो रहा है, राइट? स्टैंडिंग कमिटीज आर एन इम्पोर्टेंट फोरम, राइट? इस चीज में आई विल गिव यू अ वेरी फेमस कोट इन लेजिस्लेटिव दिस थिंग कि लेजिस्लेटिव लिटरेचर में एक बहुत फेमस कोट है, इट इज वुड्रो विल्सन जी ने एक बार इसका मेंशन किया है, दैट इज ऑफ कोर्स रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट फॉर इंडिया, right? So the parliament in the parliament or the Congress in the US, right, is in the plenary is for exhibition, the parliament in the committee is for work, right? So come and abhi, while sitting here, because you gave me such a great opportunity, right, to discuss on this issue. I went through a lot of documents, I went through a lot of literature, and on YouTube there is a particular parliament. What they do is, for newly elected MPs, they have an orientation program, right, every new session. And I was viewing the orientation program for this 18th Lok Sabha. The person who was speaking, the MP who was speaking, very seasoned and very experienced MP, his name is Jagdambika Pal. Right? This is available on YouTube. So you can see in his own orientation program, Jagdambika Palji is saying that देखो, the best work in parliament is happening through committees. The best work, right? कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, एक या दो सवाल पूछ के उसके बाद आप सवाल नहीं पूछ पाते। But when you call a secretary to the committee meetings, आप एक नहीं, दो नहीं, आप 5 सवाल पूछ सकते हो, and the secretary is has to answer to these questions, right? So जब हम पार्लियामेंट का अंडर टाइम का प्रॉब्लम देख रहे हैं, we can't see it only in the perspective of plenary. Plenary में कम चीजें हो रहा है, वो भी important है, because why it is important to have discussion in the plenary? Because जो special interest होते हैं, जो स्पेशल इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस होता है, वो पता चलता है प्लेनरी। सो स्पेशल इंटरेस्ट जैसे बिजनेस ग्रुप्स होता है, उन सब के इंटरेस्ट होते हैं, राइट? एंड वो इंटरेस्ट को वो अकोमोडेट करके लेजिस्लेशन आता है पार्लियामेंट में। बट जब फ्लोर ऑफ द हाउस में वो लेजिस्लेशन आता है पार्लियामेंट में, आपको पब्लिकली उसको डिफेंड करना है, राइट? आपको पब्लिकली उसको डिफेंड करना है अगेंस्ट ऑल दीज डिफरेंट एक्यूजेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो
I'm not saying plenary is also a very important thing, right? और जैसे बोलते हैं सुनने की क्षमता होना चाहिए, राइट? तो पार्लियामेंट में आपको सुनने की क्षमता आपको सबसे ज्यादा दर्शाता है. कमिटीज में यू कैन हैव द इंटेलेक्चुअल वर्क दैट इज गोइंग on, right? You can have academia, you can have practitioners, you can have so many of us, talking about all these issues, right? But in the parliament, you have to expose it to public scrutiny. And that's why having both of them important. The main problem, Saurabh ji, I want to end with my reaction. The main problem is that we are having fewer discussion in parliament in the plenary, जो house में है, and then we are having fewer discussions in the committee also. इसमें long term effects बहुत है, right? And I want to tell you that because this is also connected to the judiciary, right? When you speak to people in the judiciary, वो बोलते हैं कि when a law is being passed, we need to know what is the spirit of the law, what is the background, right? कि कौन से पृष्ठभूमि से ये particular legislation अभी आया है, right? वो पृष्ठभूमि आपको डिस्कशन से ही पता चलता है, राइट? सो हाउ डू दे फाइंड आउट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए? दे लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, दे फाइंड आउट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या हुआ है, व्हाट वाज द स्पिरिट बिहाइंड व्हिच दीज वर्ड्स वर गिवन. बट पार्लियामेंट में ऐसा है ही नहीं ना, बिकॉज डिस्कशन ही नहीं हुआ है, राइट? एंड सो दैट इज द रीजन, मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ व्हिच डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बड़ा पहली बार मैंने ये वाला पर्सपेक्टिव सुना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जुडिशरी का पर्सपेक्टिव. नमस्ते, अगर आपको हमारी पुलियाबाजी पसंद आती है तो हमारी हिंदी प्रिंट मैगजीन को ज़रूर चेक कीजिए. पुलियाबाजी मैगजीन का दूसरा अंक आ चुका है. विषय है कानून का शासन और समीक्षा है हमारी अदालतें, कानून और गणतंत्र की. इस मैगजीन में आप पढ़ सकते हैं विशेषज्ञों द्वारा लिखे ओरिजिनल आर्टिकल्स हिंदी में. इसे आप हमारी वेबसाइट के मैगजीन सब्सक्रिप्शन टैब पर जाकर खरीद सकते हैं. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप सबस्टैक पर अपना सपोर्ट हमें प्लेज कर सकते हैं. पुलियाबाजी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया. अगला सवाल यही था कि अब ये अलग अलग तरीके कौन से हैं जिससे हमारे विधायक संसद में हिस्सा लेते हैं, जो शायद हमें इतना नहीं पता है. या सो विधायक तो मैंने जब जैसे बोला था, एक क्वेश्चंस है, राइट? क्वेश्चंस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक और टू लॉन्ग टर्म थिंग्स, राइट? एक 0 आवर है जो इमीडिएट कोई इश्यू आया है, it may or may not be recorded formally, but usko they have to express that, right? So on the floor of the house wo karte. Then you have different provisions like rules 377, right, where they are largely expressing constituency level issues, right? Other than that, of course, they participate debates mein, wo participate karte hain. zyadatar hamare yahan it is a very government driven parliamentary agenda, right? So government driven parliamentary agenda में क्या होता है, गवर्नमेंट एक विधायक लेके आता है, एंड देन ऑल दिस एक विधान लेके आता है, एंड ऑल दिस लेजिस्लेटर्स उस पर डिस्कशन करते हैं, अपने राय लेते हैं. ऑफ कोर्स एज आपने पहले बोला था एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड डिस्कस मोर, राइट? बट बिकॉज वोटिंग तो हो कर नहीं पाते हो, राइट? जो उनके पार्टी लीडर जो भी बोलते हैं वही करते हैं, राइट? तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने के लिए दे डू participate through speeches, and some very good speeches are there, right? For example, जो women's reservation bill का भी जो speeches है, they were very good quality speeches on various aspects, right? वो हमारी तरह academic लोगों की तरह वो technical चीजें नहीं बोलेंगे, ये फिगर वो फिगर, but वो लोगों का sentiment समझते हैं और वो लोगों को कैसे communicate करना है वो समझते, and the same insight which we will give through numbers, through logic and all that, they are able to communicate in the words that people understand. So उस हिसाब से आप देखेंगे, then parliament में बहुत अच्छी चर्चा होती है कभी-कभी. So that is one. Of course, there is a great potential in private member bills, right? So which is underutilized, right? So the US में क्या होता है कि bills are known based on the legislators जो introduce करते हैं उनके नाम पे ही होता है, right? पर इंडिया में एक प्राइवेट, सबको पता है कैरी लूगर बिल वगैरह, तो ये उन लोगों के नाम है, हम लोगों को ऐसा कोई नहीं पता कि किसका. हाँ, तो हमारे यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल एक चीज पे आया है, राइट? बट वी डोंट नो मच, राइट? वी डोंट नो मच अबाउट, और लोग भी ज्यादा उसको पब्लिसाइज नहीं करते.
But that's also because as a parliament we are not giving it importance, right? तो MPs also influence होते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशन किसको इम्पोर्टेंस देता है. अगर इंस्टीट्यूशन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देता है तो वो क्वेश्चन ज्यादा यूज करेंगे. अगर इंस्टीट्यूशन वोटिंग को इम्पोर्टेंस देता है तो वोट देख के करेंगे. अगर इंस्टीट्यूशन प्राइवेट मेंबर बिल्स को देता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल्स, राइट? बट आई मस्ट टेल यू द initiative of MPs, right, is really shown कि there's a huge jump in the number of private bills, right? लोग करना चाहते हैं, like people want to introduce. You can look at PRS's latest data on private bills. There's a huge jump, right, in private member bills. मतलब MPs participate करना चाहते हैं, they want to put their views forward, right? But they are blocked from putting their views forward because even the private member bills जो होते हैं बहुत ही कम डिस्कस होते हैं, right? I would say maybe about 5% or so bills are even discussed, which have been, right? So मैं कुछ विधायक मैं कुछ विधान डालता हूँ, वो डिस्कशन नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पे, right? But it's still a very good symbolic measure. It's still a very good symbolic measure, and I'm seeing that the evolution of private bills. पहले क्या होता था कि private bills were primarily introduced only by the intellectual class, right? But now we are seeing more and more private bills, right, being introduced by other members of parliament also, right? So because they are seeing that this has a very important signaling effect, right? And so they say ki, let me introduce a new policy idea, right? For example, जैसे UCC का अभी discussion हुआ है, that was introduced as a private bill, right? A private member bill में introduce हुआ है, and then after that, it's like a trial balloon, जो हम बोलते हैं communication literature में, हम बोलते हैं it's a trial balloon. तो हम एक ट्रायल बलून इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, राइट? इट्स अ लो रिस्क काइंड ऑफ अ थिंग. मैं जनता का राय समझना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है इस पे, एंड देन आई डिसाइड वेदर टू टेक दैट अप फॉरवर्ड और नॉट. So many MPs are introducing these as trial balloons, right? Now, for example, there is a new bill that is being discussed on marital rape, right? So those are things that you introduce it as a trial balloon and see what is the reaction of people, and then the government will then gauge, okay, जनता की क्या राय है उस पे, किस तरफ से आगे बढ़ना है, right? So this is all, I don't think we should take the politics out of parliament. The politics is very much part of parliament, Of course. right? Play with politics, work with politics, but have a larger goal behind that. That is my, if you can ask. And so these are very useful instruments that MPs can actually use. अजित, ये जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल था वो भी बहुत 1990s में एक प्राइवेट मेंबर बिल की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दैट. Possibly, right? I'm not exactly sure about the exact aspect about the private bill being introduced, Okay. about the women's reservation being introduced. But certainly we had bills in, I think it was 1996, when the women's reservation bill was first introduced by the government in parliament, right? And then it was taken back, and then once again I think it was introduced roughly, I think in 2012 or 13, and then once again it passed through Rajya Sabha, but then it could not pass through Lok Sabha, and then now in 2023, right, the bill got passed but with an extended timeline, and now the next phase of that अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होने वाला है, right? Yeah. अजित, क्योंकि आपने विधायक के इंसेंटिव्स की बात की तो उसी के ऊपर मेरे एक दो सवाल थे. तो एक इंसेंटिव मैं ये जानना चाहता था, आपने वो विड्रो विल्सन का कोट बताया, तो जो स्टैंडिंग कमेटी का काम है, मुझे भी पता है कि वो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, हम लोग तो डिफेंस वगैरह के लिए वहीं पे डेटा मिलता है. तो स्टैंडिंग कमेटी के जो डिस्कशंस होते हैं वो लेकिन रिकॉर्डेड नहीं होते, जबकि प्लेनरीज के टीवी पे होते हैं. तो आपके हिसाब से क्या स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन गुप्त रूप से होना चाहिए या फिर वो लाइव होना चाहिए? लोगों के दोनों विचार रहते हैं, एक लोग रहता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है? वो एक सवाल. और दूसरा इंसेंटिव ये है, अब आपने बोला लेजिस्लेटर्स का इतना इम्पोर्टेंट काम है, डिस्कशन करना है वगैरह, लेकिन अब हम लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं. हम लोग एक विधायक को भी एक एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं MPLADS वगैरह स्कीम के तहत,
और हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम एक्चुअली ये सवाल ववाल पूछना नहीं है, वो मत पूछो, तुम जाके 5 करोड़ का एक बस शेल्टर बना दो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों इंसेंटिव्स तो खराब कर रहे हैं उनका जो काम है। तो आपको क्या लगता है, पहले स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर वो पब्लिक होना चाहिए या नहीं, और ये MPLADS के ऊपर? I mean, largely I am for transparency, हम्म, right? So as a goal, I feel that there should be transparency, right? And so the fact that standing committees are still closed is a matter of is an agenda that we should keep discussing, right? But I also know, and हमारा own experience है पार्लियामेंट के ऊपर कि जब सोमनाथ चैटर्जी, श्री सोमनाथ चैटर्जी ने इंट्रोड्यूस किया था in 2006, he opened up the parliament to television broadcasting, right? तो उनके बुक में एक चीज लिखा था, right, that he had discussed with the prime minister Manmohan Singh ji of the day, that and there was a lot of discussion that happened before that. And Somnath Chatterjee ji had said कि अगर हम लोगों को पार्लियामेंट दर्शाते हैं तो पार्लियामेंटेरियंस का बिहेवियर बेटर हो जाएगा. That was his hypothesis, right? पार्लियामेंटेरियंस का बिहेवियर बेटर हो जाएगा. एंड जो भी डिस्ट्रप्शन था उस टाइम पे, डिस्ट्रप्शंस वर, if I have to give a number to that, because I am a quantitative researcher, right? I would say that a proportion of disruptions as a measure of overall parliamentary time, that was about 10%. राइट, तो 14 लोकसभा के बीच में उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स अराउंड 2006, राइट? एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड इट. और 15 लोकसभा में आप देखेंगे द टाइम लॉस्ट टू डिस्ट्रप्शन दैट हैज जंप फ्रॉम 10% to 40%. Wow. Right? 10% to 40%. Right? It's not like a 10 to 12%, 10 to 15%. It is like a 4 times jump in the proportion of disruption. राइट? तो अभी आप पूछ रहे थे पार्लियामेंट का टाइम कहाँ कम हुआ, राइट? दिस इज अ बिग कंपोनेंट, राइट? ऑफ कोर्स 15 लोकसभा वाज एन एक्सेप्शन जो 40% हुआ है, बट स्टिल इवन नाउ, राइट, वी डिपेंडिंग ऑन विच लोकसभा वी आर लुकिंग, वी आर फाइंडिंग अबाउट 20% ऑफ पार्लियामेंट्री टाइम विच इज लॉस्ट, राइट? तो जो भी हमारा टाइम है, आप 70 इंटू पर डे 6 लगा के चलोगे, 20% of that is lost due to disruption, which also reduces the time on discussions on bills and things like that, right? So that has led to an opposite impact, right? And वो मेरे चर्चे के विषय में है, and we have used very systematic data, sitting wise data on parliament, जो large data set होता है पूरा हमने analyze किया है, and we found that आप जब पार्लियामेंट को ओपन कर देते तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जनता उसको देखती है, वो सही बात है, इट शुड हैपन, राइट? बट जनता जब उसको देखती है तो जो मेन पार्लियामेंटेरियन का ऑडियंस है, राइट, वो पार्लियामेंट से शिफ्ट होके, डाइवर्ट होके वो जनता तक जाती है, राइट? तो वो पार्लियामेंट को भी समझते हैं, जैसे हमारा टेलीविजन डिबेट है, मुझे एक डिबेट का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं 1 मिनट मुझे मिला, मुझे सबसे ज्यादा उसमें इम्पैक्ट करना है, मुझे दिखना है, मुझे वायरल होना है, राइट? एंड सोशल मीडिया ने भी काम आसान नहीं किया है, राइट? पहले जब टेलीविजन होता था, ठीक है, लोग घंटों तक थोड़ा बहुत स्पीचेस देखते थे, अभी उनको वो स्पीच 1 मिनट में देखना है, तो 1 मिनट में तुम क्या कर सकते हो जो पूरा वायरल हो जाएगा, राइट? एंड दैट इज नाउ बिकम द इंसेंटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमपी कि वो क्या बोले, 1 मिनट 2 मिनट में क्या बोले कि वो वायरल हो जाए. और स्पीचेस में आप कम ही बोल सकते हैं वायरल होने के लिए, तो कुछ बड़ा सा कुछ एक्शन कर दो, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज एन इंडिया स्पेसिफिक थिंग, राइट? फॉर एग्जांपल लोगों ने देखा होगा कि न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में, right, there was a very demonstration, right, from an indigenous community legislator, the Maori, Yes. right? So there was देखा a है. legislation which came in there, जो उनको लगा कि this will go against our community. They really danced on parliament, right? Maori dance जो था the Maori dance they showed on parliament. So this is not an India specific scenario. This is a worldwide scenario. The same incentives apply everywhere, right? But how much you want these incentives to apply depends on कि आप social norms क्या create करते हैं,
राइट? अब यूएस का कांग्रेस को देखिए, राइट? लुक एट द यूएस कांग्रेस, राइट? उनके प्रेसिडेंट तो बिना कांग्रेस के पूछे, बिना सेनेट के पूछे वॉर में चल गया, राइट? राइट? पर फिर भी दे आर नॉट एक्टिंग लाइक दिस, right? They are not acting like this because we should look at other parliaments. We should look at other parliaments in an extreme situation like that, right? We are not seeing scenes of this happening in Congress, in Senate. बाकी जब guests भी आते हैं, they have a way of, you know, so we try to look at it because we felt, oh, in the Western world, the ruling party and opposition are antagonistic, adversary to each other, right? But that is not our cultural expression, right? We have a more friendly, we don't have an adversarial view towards our people who have a different mood, right? There was a famous quote by Atal Bihari Vajpayee ji, right? मतभेद हो सकता है but मनभेद नहीं हो सकता, right? That means we are not adversarial to everybody, right? So what we are seeing over here, and scholars like I believe it was Devesh Kapoorji who has written about India and crime in India, and he says that if you are looking at the per capita GDP of India, the crime level is much low. Right, so we are not a violent society. Why are we seeing violence being? I'm not saying violence. We are not violent. Also, we are non-violent. But why are we seeing this kind of an adversarial, seeing on the parliament scene? For me, it is an unnatural behavior, right? Considering what is the cultural makeup and what is our societal values. So we need to really change, and we really need to think about that. I'm not saying that there is not unfairness, right? There is some degree of unfairness, but we need to find acceptable and good ways to kind of express whatever opposition that we have, right? Because I feel that parliaments are a microcosm of the nation, right? There are hundreds and millions of youth who are seeing you there, right? You are the inspiration. You are the leaders who have to tell them how do you do conflict resolution, right? You are the leaders who have to tell them how to solve the problems of the country, right? आप खुद वहां पे लड़ते झगड़ते ब्लॉक करते बैठेंगे, तो how are the youth of our country coming to know how to solve the problems of the country? And that is the reason why I'm a little bit attached to this issue. पर अजीत, आपने इस पे काफ़ी एम्पिरिकल रिसर्च किया है, तो थोड़ा सा इस पे जाइए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि सोमनाथ चटर्जी जी की जो थीसिस थी वो तो आपके रिजल्ट्स बता रहे हैं कि ज़्यादा लोग डिसरप्शन हो रहा है, और विधायक और मतलब थोड़े से हम कह सकते हैं थोड़ी ड्रामाबाजी भी होती ही है ज़्यादा, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इसके अलावा और आपकी रिसर्च में और कुछ चीज़ें भी बातें आई है कि जो ज़्यादा करते हैं ऐसी चीज़ें उनको ज़्यादा बोलने का मौका भी दिया जाता है, ये भी शायद आपके रिसर्च में आया है। तो थोड़ा सा उस पे और बताइए ना कि पार्टीज इनको प्रोत्साहित कर रही है क्या इस प्रकार का बिहेवियर? Yes. So ये सिस्टम बन गया है, राइट? और मैं इतने आपको मजेदार चीज बताता हूँ कि वो कैसे ये सिस्टम बन गया है, राइट? सो ये सिस्टम बन गया है बिकॉज वी हैव embedded an adversarial role of politics, कि हमें adversarial बनना है। जब तक हम adversarial नहीं बनेंगे कुछ हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी, and that is how we have created that, right? And now we are creating incentive mechanisms which are going to make this adversarial thing come on the ground, right? And one of the things that we do, and that is what my research shows, which is once again a very rigorous quantity. But यहाँ पे I'm not, I'm trying to bring stories behind what I'm doing, right? You can go through the serious and the number crunching and the causal mechanisms. You can see all of that, right? So these are, these are papers that are either published or under review in some of the, top political science journals, right? So you can go through some of those, this thing. But I wanted to say from a very clear kind of thing that, how do parties incentivize this behavior? Now, if you look at a member of parliament, what is the most important thing a member of parliament wants, right? Anybody in power,
right? They are attracted to the fact that that power should sustain. I should not lose power हाँ next time. मुझे रीनॉमिनेट होना है, हम्म, right? And उसके लिए जो भी होता है मैं करने के लिए तैयार, right? And my research shows that if you have not participated in even one disruption, कुछ लोग हैं ऐसे, that they are very strongly protected to their ideals. They don't want to, they feel that, institutions should be protected. कोई भी party में हो. I mean, last time, to 15th Lok Sabha mein, it was NDA, now it is UPA. There are these people from across various parties, right? And so, if you participate in a particular, at least one disruption, right? That means you have said, Acha, you have given yourself to the party leader, right? That I am going to put myself into you, even though it is compromising on the institutional value, reputation, legacy, and things like that. तो एक बार भी करने से आपको रीनॉमिनेशन प्रपोर्शन लाइकलीहुड ज्यादा हो जाता है, आपको डिबेट्स में ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिलती है, राइट? सो यू गेट मोर ओकेशंस टू डिबेट. हर कोई चाहता है कि उनका पार्टी लीडर उसको रिकॉग्नाइज करे, राइट? और पार्टी लीडर का रिकग्निशन कैसे पता है? उसको रिनॉमिनेशन में पता चलता है, उसको डिबेट में पता चलता है, राइट? कि पार्टी मुझे कितना, बिकॉज इट्स नॉट ओनली दैट इंडिविजुअल हु वांट्स द डिबेट, उसके फॉलोअर्स भी उसको देख रहे हैं ना. सर इतने इश्यू पे आपको चांस भी नहीं मिला बोलने के, राइट? वो बोलेंगे ना. So you are not only working as a legislator, you have the entire machinery with you. And if you create such things कि यार ये हमारा पार्टी लीडर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो कब तक तुम लड़ोगे उससे, राइट? तो कभी ना. सो इफ यू डोंट गेट डिबेट अपॉर्चुनिटीज, इफ यू डोंट गेट रिनॉमिनेशन पॉसिबिलिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स. एंड दीज आर द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे पार्लियामेंट में है, विच आर द कंट्रोल ऑफ आवर पार्टी लीडर्स, राइट? एंड दैट इज व्हाई, इनफैक्ट ये मैं नहीं बोल रहा, राइट? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर, right? So in 2001, right, एक separate मेरा एक research paper है which is analyze these debates. In 2001, right, there was a special session, right, which was conducted where leaders of various parties, MPs of various parties were invited to talk about discipline and decorum in parliament, right? It's a public document. उसमें legislators have said, yeah, sir or madam, I don't want to go onto the floor of the house. I feel it's a wrong thing to do, right? But my party leader is forcing me. I will not get opportunities to do that. मैं क्या करूं? मुझे जाना पड़ता है, नहीं तो मेरा पॉलिटिकल करियर ही समाप्त हो जाएगा. वाओ, क्या Right? सही चीज है. हाँ, Yeah. So तो this is a quotable quote, हम्म, right? That you can actually see. And this is what I found. I've interviewed, right? So, when I was, a fellow in the parliament, I got to interview 100 members of parliament, right? And various issues that we ask them, and they are very much dependent on their leaders for their success and their progress, and that is the way the Indian system has become. नहीं ये तो बहुत एक बड़ा फ्लॉ है कि पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा और बढ़ गया है हमारे लोकतंत्र में, और उसका खामियाजा बाकी जो संस्थाएं हैं वो भुगत रही हैं. तो इसमें भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगा. तो आप कह रहे हैं कि गुंडापा इज रिवॉर्डेड, और जितना गुंडापा करोगे तो तुमको और रीनॉमिनेशन भी मिल जाएगा और तुमको और बोलने का भी मौका मिल जाएगा. तो ये तो हम और लोग नहीं करोगे बहुत तो ही नुकसान Let me भी add होगा. another दिलचस्प कहानी इसमें, हाँ, right? So it's not only that Gundapa is rewarded, हम्म, right? Let me tell you one thing, right? So these days, when people have to get tickets, right? And this is told to me by an MP. They look at the physical strength of that person, right? Because to stand on the floor of the house for long hours, right? कुछ और कुछ धक्का तो मुक्की करने के लिए, हाँ, धक्का मुक्की करने के लिए मार्शल को धक्का देने के लिए. एक बड़ा फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए ना. या सो आप वेल के ऊपर खड़े हैं तो आपको दिखना भी चाहिए ना, राइट? यू नीड, सो दैट इज बिकम वन criteria for thinking about who are the people who should be given ticket in the parliament. So it's gone one level further. अरे बाप रे. बाप रे. और Yeah. अजीत, जैसे अभी बात हो रही थी 800 पार्लियामेंटेरियन हो जाएंगे, मतलब तो उसमें तो और ये हो जाएगा, और लोगों को चांस नहीं मिलेगा बोलने का, क्योंकि 800 लोग तो बोल नहीं सकते इतने Yes. कम दिनों में. तो अगर मुझे
कुछ बताना है कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो मैं और डिसरप्शंस करूंगा। Yes, exactly. So you have number of incentives. So ज्यादा लोग हैं, कम opportunities है, social media है, which makes you do something dramatic एक कम time में, number of sessions reduce हो रहे. So overall everything is up in the current situation. Overall जब तक आप देखेंगे, right, the entire incentives are all aligned to make things worse the way they are. Right? But there is a light at the end of the tunnel. मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा. I mean, yeah, it's not nice to give a totally depressing. I have come. नहीं, अभी बता दीजिए। I want नहीं, अभी रोशनी कर दीजिए यहाँ पे। हाँ, बड़ा हाँ, अंधेरा हो ऑलरेडी गया है। काफी डिप्रेसिंग हो गया है। हाँ। Yeah, so there is light at the end of the tunnel, and that also depends on, you know, that also depends on how much our party leaders can, you know, move forward, right? And ये मैं आपको बताना चाहता हूँ को because you know while of course the social media has created the incentives, right? I'm finding that there's a different trend also. It's not that social media doesn't value longer videos. This is a live example, right? What we are doing right now is a longish video, right? Right? Some of the big influencers have long videos, right? They're still very popular, right? But you want content, right? You want content, and you want content to be interesting also, right? And so this is a great opportunity in India for us to develop really strong, good oratory leaders in India. Right? Really strong, good oratory young leaders in India. It's a great opportunity that has opened up. Right? So the reason I can understand that parties may not want, you know, maybe some senior leaders, right, who may not have the same kind of oratory skills, right, may not want to change the current system because right now it's not prioritizing oratory skills. एक young leader का कुछ viral हो गया, they are. But if senior leaders open up, right? We are a young country. The young voters want to hear the young leaders. If the senior leaders open up and say that this is going to be electorally beneficial for us, let us bring the young leaders forward. Let them learn oratory skills, right? And even if they are longish speeches, right? If you are expressing, you know, the views of the people with good oratory skills, that can still travel. So there's a lot of opportunity for parties to look up, give opportunities to young people, create the possibilities for oratory skills and so on, right? And I see another opportunity in this, right? And this is a horizontal opportunity. One is I was talking about a vertical opportunity, a vertical accountability opportunity, where people are demanding, I want young people to be seen. I want strong speakers to be seen, right? Because yeah, today in terms of content, people want content, right? They are also bored of, you know, just hearing, you know, rhetorical flourishes. They want content. They want people, right? So that is one vertical accountability, but there's also horizontal accountability, right? And we see that increasingly, right, there is this discussion between the parliament and the judiciary, right? So the parliament and executive leaders are talking about the problems of the judiciary, right? But judiciary, right, should also then, you know, protect its ground, right? So what I'm saying is that, you know, we have a lot of issues with our judiciary, right? There's procedural problems with the judiciary. But still, if you're looking at it, the Supreme Court of India sits for about 200 days in a year, right? It stays जबकि वो for 200 समर days. छुट्टी भी लेते हैं, फिर भी Summer वो छुट्टी भी लेते हैं. We need to improve that. I'm not saying that. But if politicians are telling the judiciary that you take vacations, you are sitting for 200 days, how many days are you sitting? Correct. Yeah, you are sitting for 60 days, right? So I always feel that competition should be to improve ourselves, right? So let the अजित parliament- मुझे Yes. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब हमारे पार्टीज है यही जो ये ड्राइव कर रही है डिसरप्शन, और मतलब वो दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपोजिशन ही करती है, वो सभी साइड करती है। तो पर उनके इंसेंटिव ऐसे क्यों है? मतलब पार्टी लेवल तो उनको लग रहा है ना कि ये डिसरप्शन करना उनके लिए फायदेमंद हो रहा है, तो वही तो इसीलिए वो एनकरेज कर रही है, राइट?
तो अल्टीमेटली ये तो लोगों से आना चाहिए कि लोग डिस्करेज करें कि इस तरह के बिहेवियर करने वाले लोगों को हम चुन के नहीं भेजेंगे, लेकिन ऐसा तो मैं होता हुआ देख नहीं रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? या तो मतलब ये सिस्टम तो बदलेगा नहीं ना, अगर अगर पार्टी ऊपर सब जो पार्टी वाले सब लोग ही ये डिसरप्शन फैला रहे हैं, मचा रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव चेंज कहाँ से और इंट्रोड्यूस हो इसमें पाएगा? और इसमें क्या ये हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये भी कहीं इन्वॉल्व है क्या? क्योंकि सारे के सारे एमपीज कहने को तो वो लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आके वो सबसर्विएंट हो जाते हैं सिर्फ पार्टी बॉस के। तो पार्टी सही। बॉस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर ये उनको लगता है कि ठीक है, एनीवे फाइनली तो मेरे को उसी की बात माननी है। तो ये इसी से लिंक्ड है, या अलग अलग है तो आप दोनों को अलग से भी ले सकते नो नो, दीज आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर। जो हैं। आप बोल रहे हैं सब लिंक्ड है, राइट? हम्म और जैसे ख्याति जी बोल रहे हैं, सब किसी कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं, राइट? देर ऑल काइंड ऑफ following their own interests. I'm not saying that everybody has their own interests, right? So sometimes in class I say that while because I'm in an MBA school, so while business values notes, right, politicians value votes, right? So everybody has their own interest. मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका career ambition they should, yeah, so if the incentives are aligned they should act, but at least in politics you are assumed to move towards larger interests, right? And you should think about, okay, as politicians, how are we kind of working for the larger interests of the country, right? And I think voters go, sometimes it's about creating proper messaging, right? In India we have that, right? We could not have changed in 70 years. हम लोग बदल तो नहीं सकते, right? Right? We were in 1950s, right? British जैसे oppressive regime में भी हमने non violence दिखाया है, right? And we have shown the direction of non-violence, right? Even when the new parliament was being formed, right? We created, we gave places to people from the opposition also, right? Remember the person who drafted the constitution, one of the most capable people we had in the generation, Dr. B.R. Ambedkar, was not from the Congress party, right? But he was still the chairman of the drafting commission. Shyam Prasad Mukherjee ji was not a member of the Congress party, but he was still a minister, right? So I think we need this kind of a broader coalition across various fronts, right? Where we are able to bring in the opposition, right? Into important places of decision making. Even the current regime, for example, when they had discussion, the JPC on the WAF bill, right? They did include people, right, in the JPC who may have different points of view, and we have to move these things forward. For me, actually, the most inspiring moment in the current parliament was the 2023 when we got a consensus in the parliament on the women's reservation. Right? We got a consensus, right? Those are occasions where I feel that, yeah, we are, as a nation, we are moving forward because we are able to get consensus, right? So if you get the larger interest right, and if you get the politics right, we have not changed as a people, right? We are still that people. We still appreciate taking people and moving forward. It's about us using that as a good signaling mechanism, right? And politicians need to get out of what I will call this vichitra vyavhar, right? They have to get more in line with the people, and I believe that the people will support this, right? People will support it, but also, so as you said, Khyati ji, that we need to have, the opposition should have a less adversarial view. The government should have a more fair view of things, right? One of the things that I talk about in the paper is that the importance of the role of the speaker, right? That can never be underemphasized, right? The speaker is the referee in a game, right? If the referee in a game is one-sided or is perceived to be one-sided, a person may not be one-sided, but it's perceived to be one-sided, right? That creates doubts in the game, right? Sometimes I have a mock parliament of अपने students के maybe, right? And I select one speaker, right? उनके कानों में जाके बोलता हूँ कि you behave like you are
towards the ruling side, अच्छा right? हाँ When the opposition is speaking, deliberately cut down their speeches. हाँ उनको पहले 7 मिनट दो, 5 मिनट में काट दो. हाँ वो बोल रहे हैं, अच्छा क्या बोल रहे हो यार, हाँ बोलिए, हाँ हाँ, हाँ right? So I make them do that, right? And I see that, right? We are talking about enlightened people here. But sometimes the people in my classroom, I mean, enlightened, I'm not saying, whatever, education, I mean, good institution, हाँ right? Whatever, right? So, yeah. So people here also get angry, right? People get angry if you're not giving them a fair chance, Yeah. right? So Correct. समझिए, right? And one of the ways by, having a good speaker is having somebody who has, their independent standing, right? Person should have an independent standing, Hmm. right? And when you are, right? So Modi ji or Nehru ji jaise log, they come once in a generation, right? If you have a towering figure like this, you should have a speaker, right? Who can talk in that manner. I'm not saying that the current speaker is not attempting to do so. The current speaker is also trying to, manage some of these things, right? But we need somebody, right, who can have the stature for for talking in front of and yeah. So we need to think some of these things, right? When we are appointing people in important positions. Yeah. अजित, मुझे एक और सवाल पूछना था MPLADS वाला ही, क्योंकि हम लोग इसका भी कुछ स्टडी हुआ है क्या कि MPLADS से एम्पेरिकली किस तरीके से लोगों का बर्ताव बदला है? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ MPLADS में अभी 5 करोड़ होता है ना एक MP के लिए, तो अब Yeah. वो कुछ लोग बोल रहे हैं 5 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया जाना चाहिए. तो हम लोग और उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि हम लोग एक लेजिस्लेटर को बना देंगे कि तुम एक बस स्टॉप की बजाय 10 बस स्टॉप बनवाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग, तुम्हारा काम वो नहीं है, तुम्हारा काम. तो इसके ऊपर कुछ स्टडी हुई है? No, so there have been many studies. In fact, मैं अपने सामने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रखा हूँ, राइट? जैसे फ्रांसिस्का जी ने एक बहुत important study किया है on MPLAD, and where he said, where do MPs tend to locate their MPLAD, and they tend to give more to their core voters. Yeah, there are a number of interesting and important studies on MPLAD and things like that. I feel these are important, right? Of course, अगर MPLAD को बढ़ाया जाए 5 to 25 crore, I think we should have some kind of this thing कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए इसको, right? But I'm also not completely against the MPLAD. Like some of there are some theoretical purists. हाँ, मुझे तो लगता है बंद कर देना चाहिए. तो आपको क्यों नहीं लगता? There's some theoretical purists होते हैं, I agree, right? So who say that या तो इस पार या उस पार, but completely we should be completely idealist, right? Completely idealist about certain things, right? But when I talk to MPs and things like that, I see कि कुछ तो वो बोल सकते हैं, when they go to their constituencies, कुछ तो एक बस स्टॉप बना दिया, एक वाटर टैंक बना दिया, या कुछ पीने का पानी बना दिया. And if you are looking at the larger scope of the budget, right? आप सब मिलाइए, 5 crores, 5 into 800 अब बनाइए कि it will not even come out to 1% of the total budget, right? So my focus is, we need people, right? We need people like Pranay ji. I saw some of the earlier videos also by Madhavan ji and Chakshu ji. They had views on this, right? But that's fine. I mean, I greatly respect them, right? But I'm okay with this happening to some extent, right? If it's not a very big amount, knowing that the practicalities that MPs and MLAs face, thoda sa agar hai, then it's fine. It's not something that will completely overturn the accountability of the executive. Yeah, so that is the way I see it. Yeah. एम्पेरिकल रिसर्च में अजीत हम लोग आई थिंक थ्योरेटिकली तो काफी लोग अग्री भी करते हैं कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है, जस्ट पार्लियामेंट्री स्पिरिट के अगेंस्ट ही. लेकिन एम्पेरिकली भी क्योंकि ये आया 80s में ही है, तो पहले बाद में हमने देखा है क्या कि लोगों के बिहेवियर में या पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कोई
एकदम फर्क आया बिफोर द एक्ट केम एंड आफ्टर, या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो शायद ये एकेडमिक डिबेट है, जब लोग तो उसी तरह से पहले भी बिहेव करते थे या बाद में भी करते हैं। Yeah. So anti-defection is a very interesting issue. Yeah. हम्म, And yeah, we have to understand that at the end of the day, politicians being politicians, right? हम्म, They will try to work in their interest. हम्म, Right? They will of course find a public justification to do whatever they are trying to do. Right. And of course, during the 1960s and 70s, that was when, if you're looking at the overall political scenario at that time, that was when the Congress was also breaking up. That was when the opposition was getting strong. 1967 elections is considered to be a watershed elections because the opposition party, as a group, Swatantra Party and others, had won in many important states in India. Right. And so when the opposition comes up, obviously there are possibilities of us switching parties, and that had become very attractive. Right. So there is this, a very interesting quote, IRR Guyana, Gayaram, Gayaram. right? sure, Which is of course. an MP. I think he was from Haryana who switched, the same party, 3 or 4 parties in the space of 2 or 3 days or something like that. Correct, Right. correct. And so that was a public justification to bring about, right? We should bring an anti-defection law. Now, when that comes to the table of the politicians, वो क्या करते? Yeah, उंगली की जरूरत है, वो हाथ पकड़ लेते. Right? Yeah. So that was an opportunity to stop the switching of parties. So they said, okay, switching of parties hum stop kar diye. Right? Okay, they created some provision, some 1/3 of the MPs will shift, then it's okay. If not, then it's a problem. Right? But वो switching of parties के साथ साथ voting का भी उन्होंने उनके हाथ में ले लिया. Right? So if I pass a whip, then if you vote against the party, you can be disqualified. And to make it worse, voting was one, but they made the word also more ambiguous. Right? आप देखेंगे, it's not limited to voting. It can be, even if I go to some meeting or something like that, it can be, interpreted in बंक नहीं मार सकता मैं बंक हाँ? हाँ बंक नहीं मार बंक नहीं सकता कर सकता, बहुत कुछ है. Yeah. So anti-defection is, expanded now, right? So that is what the politician of the day did, because the politician of the day, right, had overwhelming majority. वो उसको जो करना था वो उन्होंने कर दिया. Right? So that is the story of anti-defection. And now that same thing has benefited, right? If I'm a party of a leader of a party, if that's benefiting me, for example, if I'm the government of the day, right? मुझे कुछ करना ही नहीं है नॉर्मल बिल पास करने के लिए, बिकॉज आई जस्ट हैव टू पुट द विप. हर कोई तो फिर वैसे भी पास कर देंगे. Right? So it works for the benefit of the government. And since you need a 2/3 majority, once again, it's just, it doesn't, yeah, unless there's a real public consciousness among all parties, right? Or there's a real, interest that is coming up, right? We are seeing that overturning this is, very difficult, right? So sometimes it's important not to set a bad example, right? Because when you set a bad example, then the worst example comes after that, right? And especially when majority governments are in power, right? When you have majority governments, that they do that, right? So you find that in a trend in Indian Parliament, right, that when majority government was in power, Parliament was weak. Right? So when 1984 to 1989, there was a majority government in Parliament, Parliament was weakened. Then 1989 to 2014, coalition government is in power, Parliament is strengthened. Standing committees आया, action taken reports आया, Parliament proceedings आया, ये सब आया. Right? So Parliament is strengthened again. Right? And then 2014 के बाद, for some time we were, doing okay, but then now committees के ऊपर थोड़ा सा दबाव है, that committees are not being, many bills are not being referred to committees and all that. So I don't think it's a particular party that is, it's just that when you get that majority power, right, that gives you that extra push to kind of do, whatever you wish to do, which can lead to dangerous precedents going.
मेरा एक आखिरी सवाल है अजित, हम लोगों को काफ़ी कुछ समझने मिला और आपके पेपर्स तो हम लोग शेयर करेंगे ही। लेकिन जैसे आपने वो रूल 377 के बारे में बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर एक आम इंसान है और वो अपने एमपी से कांटेक्ट बढ़ाना चाहता है या फिर अपने एमपी को और इफेक्टिव बनाना चाहता है एक आम नागरिक के तरीके से, तो क्या कर सकता है वो, किस तरीके से अपनी आवाज उठा सकता है एमपी की? A general awareness of these instruments एक first step होता है, जनरल अवेयरनेस ऑफ these कि मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ। लोग हमेशा उनका व्यू पॉइंट रहता है कि पार्लियामेंट होता है, झगड़ा होता है, एंड वी नीड टू चेंज दैट, right? So I think at a large level we need to change that, improve the reputation of the parliament, and that is possible. It's possible to do that. It is in the interest of the own parliamentarians, right? अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर का रिस्पेक्ट चला जाता है संसार में, so I feel that I should improve that, right? So parliamentarians need to work towards improving their own self impression also, right? But वो होने के बाद, right? So people should engage more, use instruments like 377 more, use instruments like 0 hour more, right? And create long term aspects about creating questions, right? Because these are things that influence. हमें लगता है that हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, उसका ठीक है जवाब हो गया, कुछ हुआ नहीं, राइट? बट ऐसा नहीं है, राइट? कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा, कोई भी रूल 377 आपने कुछ डाला, वो सिस्टम में रहता है, राइट? यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ इन द सिस्टम, राइट? एंड रजिस्टरिंग योर सेल्फ इन द सिस्टम इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट? बहुत सी चीजें सिस्टम में रजिस्टर होके एक एक करके यू आर ट्राइंग टू, हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, right? We are all putting our thing in the ocean so that पानी एक एक करके we should do that, right? जो भी हमारा इश्यू है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि everybody has he should do everything for everything, नहीं, right? Some people may be interested in poverty, some people may be interested in education, some people may be interested in health, some people may be interested in gender, some people may be interested in culture, some people may be interested in national security, whatever your interest is, right? एक चीज आप उसमें, you should do something and interact with the parliament in some ways. I'll give you an example, right? So when RTI came into being, right? Yeah, so many people felt कि कौन इसको use करेगा, right? Sometimes, and I always feel that, right? And I think I've heard people in Takshashila also say that make things simple to do, make things straightforward to do. The biggest thing about RTI is that it was so simple to do, right? It was so straightforward to do, right? It's a simple form. You put your what you want. You put a 10 rupees. I don't know now if that amount has increased, and then you are able to democratize the same process, right? So why not have Parliament do that, right? Why not have Parliament make the system so, right? And we can learn from other institutions, right? We should make our Parliament more accessible, right? The day when Supreme Court became very popular, right? I mean, imagine the Supreme Court had lost a lot of its reputation after the emergency, right? Then after that, they came in with this innovative instrument called the PIL, public interest litigation, right? And then said, you don't need any qualification. You don't need to be a lawyer also to put a public interest litigation. You can write, and that was a message that, right, went in those days. You didn't have social media, but that was a message that went viral, right? You can write on a postcard, and the Supreme Court of India will look at what you have written, right? So if you can have that kind of a system for an institution that is not in direct touch with the people like the parliamentarians are, why can't you have that kind of an institution from the parliament also? It will create waves of things, and it will create things where parliamentarian and the reputation of parliamentarians will improve. Yeah, I hope I've given you some ideas. I think this is a great ideation process. Yeah, and नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा रहा अजीत। मेरे ख्याल से
कम से कम पुलियाबाजी सुनने वाले तो अपने एमपीज को अच्छे से एंगेज कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपका सजेशन एमपीज के लिए और भी ज्यादा है। मुझे मालूम है कुछ एमपीज जरूर पुलियाबाजी सुनते हैं, तो शायद ये आवाज वहां तक भी पहुंचे कि कैसे पार्लियामेंट को भी इनिशिएट करना चाहिए कि वो कैसे अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं और अपनी साख जनता के बीच में बढ़ा सकते हैं। तो दोनों तरफ की बात है। तो ये बहुत ही, मुझे तो बहुत कुछ नई चीजें आज सीखने और सुनने को मिली। अजीत, बहुत बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी बहुत कुछ नया आज सीखने को मिला होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका ये समय हमारे साथ बिताने के लिए। Yeah. Thank you very much, Pranay, Saurabh, Khyati. Thank you very much for inviting. It's a great occasion that मैं आप तीनों स्कॉलर्स ने मुझे टाइम दिया, राइट? उससे ज्यादा हम नहीं है स्कॉलर इस विषय पे, आप स्कॉलर हैं। I mean, yeah, I don't, yeah, Khyati ji and Pranay ji, your book is an excellent book on how you can make things so easily communicated to the people. Maybe I have prescribed that book, right, as part of some of the readings, because हमारे यहाँ so भी, much. students these days are more visual, and you have given them a great possibility of, seeing some of these things. Thank you very much, and thank you for inviting me. शुक्रिया। सुन लो पुलियाबाजी देखने वालों, ये किताब नहीं पढ़ी तो आप बहुत कुछ नुकसान हो रहा है आपका। थैंक यू। आपके बहुत समय के मजेदार लिए है। शुक्रिया। we need tools which can be, we make knowledge as well as मजेदार, तो दोनों चीज। हाँ, I love the cartoons also. बहुत थैंक यू। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि लोगों को इंस्पायर करें कि हम अपनी पार्लियामेंट के तरफ कुछ कर सके, हम भी इसमें अपनी कुछ छोटी सी चीज रजिस्टर कर पाए तो कर सके। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.